Hi everyone, welcome back to our channel Commerce Cafe. So in this video lecture today we are going to start some formulas, the formula which we are going to use in this chapter in marginal costing. But इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको marginal costing का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फॉर्मेट क्लियर नहीं है, तो प्लीज इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, पहले उसको देखिएगा, उसके बाद इस फॉर्मूले के वीडियो को देखिएगा. ओके, तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So our first formula in this chapter is profit volume ratio. Okay, so our first formula is okay. So formula number one is profit volume ratio. Profit volume ratio is also known as PV ratio. ज्यादातर हम इसे PV के नाम से जानते हैं, right? PV means profit volume ratio. We can also call it as PV ratio. PV which means profit volume which means PV. तो PV ratio का जो formula है that is contribution upon sales. ओके, अब इस कंट्रीब्यूशन को हम इसे सी करके भी मेंशन करते हैं, राइट? फॉर्मेट में ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल. ओके, इसलिए आप लोगों को बोला है कि जो फर्स्ट वीडियो हो जाकर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि फॉर्मेट क्या है. सो आवर फॉर्मेट ऑफ दिस मार्जिनल कॉस्टिंग इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. You will get your contribution which is also known as C. You can write C also. C means contribution, divide by, in short form this is S, which means sales, right? So sales minus variable cost, you will get contribution, and from that contribution if you'll minus fixed cost, you will get your profit. This is your format of marginal costing. Okay, बहुत ही छोटा सा और सिर्फ 5 वर्ड का फॉर्मेट है. पहले सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट है, एंड देन प्रॉफिट है. ओके, सो दिस इज योर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. बट द प्रॉब्लम इज व्हाट इज पीवी रेशियो, व्हिच मींस व्हाट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एक्चुअली होता क्या है? सी, as a name indicates profit volume, what is your profit as compared to volume. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया एज कंपेयर टू फिक्स कॉस्ट. ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो मेनली किस पे फोकस करता है? वेरिएबल कॉस्ट पे, राइट, एज कंपेयर टू फिक्स कॉस्ट. वैसे नॉर्मली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, व्हाट वी डू, वी कंसीडर वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड. बट मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसा है? द प्रॉब्लम इज हियर मार्जिनल कॉस्टिंग फोकस मेनली ऑन variable cost. Okay, so here the profit means contribution, right? So what is your profit as compared to your sales? So this is profit volume ratio, which means you can compare your profit as compared to your volume. Okay, in this case this will be a profit, and sales means volume means how much output you have sold. Sales means what is the amount that you have sold, or what are the units that you have sold, right? So that is sales. So profit volume, which means we are comparing our profit as compared to sales. Okay, ratio मतलब क्या होता है? Comparison होता है ना. Ratio is what? It's actually a comparison, which means we are comparing our contribution as compared to sales, right? So this is our PV ratio, and the formula is contribution divided by sales. Okay, so our next formula is break even point. Okay, this is very important term. Okay, you might have heard this term in economics also. Break even point. What is break even point? We can also call it as BEP. हम लोग इसे BEP का भी नाम देते हैं, which means हम लोग इसे BEP के नाम से भी जानते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, बट एक्चुअली व्हाट इज BEP, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट इज अ थिंग where there is no profit and no loss, nil, right? Where there is no profit and no loss, that thing is known as break even point. Okay, no profit no loss means what? Suppose you have produced your product, produce your product for 100 rupees, and you are selling that product for 100 rupees in the market. What is this? We have no profit and no loss. जितने में बनाया उतने में ही सेल किया है, right? ना उससे कम ना उससे ज्यादा, right? So this is known as break even point. Same, your cost and your selling price will be same. It will be at same level. Okay, your cost and your selling price, it will be same. It will be at same level. Suppose you have produced your product in 50 rupees and you are going to sell your product at 50.
दिस थिंग इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, विच मीन्स ऐसा पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ऐसा पॉइंट जहां पे आप अपने सारे एक्सपेंसेस को रिकवर कर रहे हो, राइट? ओके, ऐसा पॉइंट जहां पे आप अपने सारे एक्सपेंसेस को रिकवर कर रहे हो, उस पॉइंट का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट, राइट? एंड द फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन पॉइंट इज, एक्चुअली वी हैव टू फॉर्मूलाज। आप ब्रेक इवन पॉइंट दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। पहला तो है रुपीज में, if you want to know your break even point in rupees, which means in value, so your formula is fixed cost divided by PV ratio. Clear? If you want to calculate your break even point in rupees, which means in amount, okay, so your formula will be fixed cost divided by PV ratio, which means profit volume ratio. Okay, and the next formula in this case is break even point. This is in units. If you want to know your break even point in units, so in this case your formula will be fixed cost divided by, instead of PV, numerator will be same, fixed cost, but instead of PV here you have to write contribution per unit. Contribution per unit. Okay, now what is contribution per unit? Contribution per unit means sales में से if you'll minus variable cost, you'll get your contribution, and that you should have in per unit. Your contribution should be in per unit. ठीक है? So if you want to calculate your BEP in rupees, this is your formula: fixed cost divided by PV ratio. And if you want to know your BEP in units, so your formula is fixed cost divided by contribution. It should be in per unit. I repeat, it should be in per unit. Contribution per unit, not contribution. Normal contribution means total value हो जाएगी, not total contribution. You have to consider contribution per unit. We want contribution per unit. Okay, so this is your formula for BEP. You have total two formulas. Okay, so the next one is third one. So in this line, we have our third formula, which is margin of safety, which is also known as MOS. We call it as MOS. So margin of safety, अब ये margin of safety क्या है? What is margin of safety? BEP जो point है, that is no profit and no loss point, ठीक है? Suppose this is your point of BEP. This is your BEP point, right? Which means no profit and no loss. ठीक है? Now, अब इस point से आप जितना आगे जाओगे, this thing, okay, suppose this is your BEP point, which means at this point, okay, you have no profit, there will be no profit and no loss. Okay, इस point से आप जितना आगे जाओगे, this line is known as margin of safety. Okay, this thing is known as margin of safety. Okay, now I will explain you with an example. Okay, suppose your production cost is 100 rupees. This is your production cost. Let's take an example. Your production cost is 100 rupees, okay, and your selling price is 100 rupees, ठीक है? Which means you are at this point, है ना? 100 में बनाया, 100 में सेल्स किया, which means you are at this point, मतलब आप BEP के पास हो, ठीक है? 100 में बनाया and 120 में सेल किया, which means आप इस पॉइंट से 20 रुपीज आ गए हो ना? ये 100 रुपीज से आप कितना आ गए हो? 20 रुपीज. सो दिस 20 रुपीज, दिस डिफरेंस, दिस लाइन इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, विच मीन्स बीईपी से आप जितना आगे जाओगे, राइट, दैट थिंग इज नोन एज मार्जिन ऑफ safety. Okay, 100, instead of 100 you're selling your product at 120, so this, okay, beyond this line, this thing is known as margin of safety. So your margin of safety in this case is 20 rupees. Okay, this was your BP. यहाँ से आप कितना आ गए हो? 20 rupees आ गए हो. So your margin of safety is 20 rupees. Okay, so your formula will be, we have two formulas. Number one, the first formula is actual sales माइनस बीईपी सेल्स. ठीक है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स सेम थिंग है. ये देखो, सपोज आपने सेलिंग किया कितने पे? 120 पे. दिस इज योर एक्चुअल सेल्स, दिस इज योर बीईपी सेल्स. ओके, 100, तो 120 माइनस 100, दिस इज योर डिफरेंस, एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज मार्जिनल, सॉरी, दिस डिफरेंस इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ओके, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स. ठीक है, सो
120 में से दिस इज योर एक्चुअल सेल्स, 100 माइनस करोगे बीईपी सेल्स, राइट, and the difference will be 20, so your margin of safety will be 20 rupees in this case. So this is your first formula, actual sales minus BEP sales. अगर आपके पास actual sales की information available नहीं है, BEP sales की information available नहीं है, तो we have different formula, दूसरा भी एक formula है, आप उसको भी use कर सकते हो. So the formula is, so the formula for margin of safety, second formula for margin of safety is profit upon PV, okay? So the formula is profit upon PV. Okay, you can use any formula according to the information which is available in your question. Actual sales और BEP sales की information available है, तो आप उसको use करके margin of safety calculate कर सकते हो. In case अगर आपके पास ये information available नहीं है, profit है, PV है, so you can calculate margin of safety by using this formula also, profit upon PV. ठीक है? So this is your formula for margin of safety. So we have our fourth formula. The fourth formula is required sales Okay, so required sales, the formula for required sales is desired profit plus fixed cost divide by PV ratio. ठीक है? So our next formula is required sales. Okay, required sales is what? If you want to know what will be your sales, okay, what is desired profit? What is desired profit? See, पहले हम लोग डिजायर्ड प्रॉफिट को समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि रिक्वायर्ड सेल्स क्या है. ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट हो, आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है, पीवी रेशियो भी पता है. डिजायर्ड प्रॉफिट इज व्हाट? यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड डिजायर्ड. व्हाट इज डिजायर्ड? डिजायर्ड मींस व्हाट? इच्छा, राइट? वी डिजायर टू अर्न दिस मच प्रॉफिट, ओके, या वी डिजायर टू हैव दिस थिंग, राइट? डिजायर मींस व्हाट? Desire means what? Ichha, right? Okay, so desired is what? Desire profit means we assume that we should earn a profit of 10 lakh rupees. ठीक है, ऐसा एक सोच लेते हैं कि हमें 10 लाख रुपीस अर्न करना है फ्यूचर में. तो अगर आपको 10 लाख रुपीस फ्यूचर में अर्न करना है, उसके लिए what will be your sales? ये तो पता होना चाहिए ना. If you want to earn 10 lakh rupees, so what will be your sales, right? So how you are going to calculate that amount? You are going to calculate that amount by using this formula. That thing is known as required sales. Okay, मतलब इतना profit earn करना है, तो उसके लिए sales कितना होना चाहिए? For that thing, we are going to use this formula. Okay, so the formula is desired profit plus fixed cost divided by PV ratio. Okay, so we have two formulas here. अगर आपको rupees में जानना है कि what would be your required sales in rupees, in amount, so you are going to use this formula. And in case if you want to know your required sales in units, so your formula will be, numerator will be same again in this case, desired profit plus fixed cost divide by, instead of PV ratio, you are going to write contribution per unit. ठीक है, ओके, एक ट्रिक बता देती हूँ. जब भी यूनिट में कैलकुलेट करने बोला होगा ना, यूनिट में, तो रुपीज वाला जो फॉर्मूला होगा न्यूमिनेटर का सेम होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा. ठीक है, जैसे हम लोग ने बीईपी में भी देखा था. बीईपी में जो डिनोमिनेटर में क्या था, यूनिट्स में, इफ यू वांट टू कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट्स, सो डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, दैट्स इट. वहां पे लिखा था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सेम हियर आल्सो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट योर रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स, कि कितना यूनिट्स हम सोल्ड करें तो वी आर गोइंग टू अर्न दिस मच प्रॉफिट. सो फॉर दैट योर फॉर्मूला इज डिजायर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला. एंड लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, पीवी रेशियो है. पीवी रेशियो का एक्चुअली एक और फॉर्मूला है. मोस्टली हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, ज्यादातर वो यूज करते हैं. बट इन सम केसेस वी यूज दिस फॉर्मूला आल्सो, एंड द फॉर्मूला इज चेंज इन प्रॉफिट upon change in sales. Okay, so PV रेशियो का ये सेकंड फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स. अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना कब है? ठीक है, जब भी आपके पास 2 years की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी ना, चेंज. ओके,
when we know the changes कब पता चलते हैं कि change in profit, which means we are doing comparison, right? And if we are doing comparison, so we should have at least two informations, right? Which means information of 2 years is available. In that case only you can use this formula. जब 2 years की information available होगी ना question में, like 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 19, 20, okay, 2 years की information available होगी. In that case you can use this formula, change in profit divide by change in sales. So this is your formula for PV ratio and that's it. आपके पास इतने ही formula है. इतने formulas को use करके आप कोई भी marginal costing का questions को solve कर सकते हो, ठीक है? You have only see, you only have total 5 formulas. 5 भी नहीं होगा, 4 होगा. ये PV का second formula है, ठीक है? Which means first one was PV ratio, second was BEP, then it was margin of safety, and then required sales. In total you have 4 formulas, right? और आई थिंक सबके दो दो फॉर्मूले, पीवी के 2 फॉर्मूले हैं, ओके, बीईपी के भी 2 है, एक रुपीज में है, एक यूनिट में है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के भी 2 फॉर्मूलेज है और रिक्वायर्ड सेल्स के भी 2 फॉर्मूले हैं, एक रुपीज में है और एक यूनिट में है. बस दैट्स इट. यू ओनली हैव 4 फॉर्मूलेज. बस इतने फॉर्मूलेज को आपको लर्न करना है. आपको इतने फॉर्मूलेज पता होना चाहिए इफ यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस which is related to marginal cost. कोई भी क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड सॉल्व इजीली कर सकते हो, ठीक है? तो दैट्स इट. बस इतना ही था आज की वीडियो में. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल विच इज रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.